So good afternoon everyone. This is Samarth and today we'll be studying gravitation. जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो के अंदर. So our topic for discussion is gravitation. So let's start. देखते हैं gravitation क्या होता है. Gravitation आपने अपने 10th class में ही पढ़ा होगा. So the basic concept of gravitation is that any body having a mass attracts another body having a mass. It's as simple as that. इसकी gravity की सबसे basic definition ये होती है, right? तो जो हम देखते हैं तो एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कैसे ग्रेविटी आई कैसे नहीं आई. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा पहले भी. इसमें क्या होता है, दो अगर ऑब्जेक्ट्स है और वो उनके पास कोई मासेस है m1 एंड m2, तो दे अट्रैक्ट, दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. और उस फोर्स को क्या बोलते हैं, उस फोर्स की मतलब प्रोपोर्शनलिटी कैसी होती है, g दैट इज f इज इक्वल्स टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर. यानी कि वो दोनों मासेस के प्रोपोर्शनल होता है और जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट. एंड देन देयर इज अ g दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिराइव्ड बाय दिस डिराइव्ड बाय न्यूटन, और उसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 to the power minus 11, राइट. ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ सकते हैं इसको. दिस इज गुड कॉन्सेप्ट दैट द डायरेक्शन जो f की होती है वो कैसी होती है. सो डायरेक्शन ऑफ f इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ जॉइनिंग टू पार्टिकल्स. मतलब अगर ये जो पार्टिकल्स है तो हमेशा f जो होगी इन दोनों की लाइन ऑफ जॉइनिंग है, तो जो लाइन को जॉइन करती है डायरेक्टली, शॉर्टेस्ट लाइन जो इनको जॉइन करती है उसके अलोंग ही होगा आपका f फोर्स, राइट. Okay, then other is when two persons come very close to each other such that the distance between them is almost zero, the person should experience a high force of attraction. Observe keenly the value of G. It's of order of 10 to the power minus 11. Okay. So इससे आपको पता लगता है कि अगर the constant value is so low, तो आपको जो डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स वो बहुत कम करनी पड़ेगी to experience a observable force, right? नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख सकते हैं. इट्स अ बेसिक एप्लीकेशन क्वेश्चन ओवर द फॉर्मूला. जो अपने फॉर्मूला पढ़ा था उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है. क्या दे रखा है, दो पार्टिकल्स है m1 एंड m2 और उनको प्लेस किया है 50 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के म्यूचुअल ग्रेविटेशन में ही इनके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही है, तो अपन को एक्सेलरेशन निकालना है, राइट. तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, लेट मी यूज अ रेड पेन. अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स है ऐसा, और एक का मास है 2 kg, एक का मास है 1 kg, डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर्स, यानी कि 0.5 मीटर्स, राइट. तो इसके अंदर फोर्स क्या होगा, तो फोर्स एक्टिंग वुड बी 2 into 1 into G अपॉन 0.5 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ G, राइट. 8 times of G. And now for acceleration, what do we have? Force upon respective masses. तो m1 के ऊपर लग रहा होगा 8/2. अगर अपन m1 उसको माने तो 4G लग रहा होगा एक बॉडी के ऊपर, और एक के ऊपर लग रहा होगा 8G, राइट. ओके, तो नाउ मूविंग ऑन, सेकेंड इलस्ट्रेशन देखते हैं. Spheres of the same material and same radius are touching each other, so that the gravitational force between them is directly proportional to the r to the power 4. Okay, so force of gravitation is directly proportional to the mass of the sphere. As the sphere have the same masses, mass is directly proportional to volume, and volume is equal to 4/3 pi r cube, right? So volume is proportional to r cube. तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाती है और मास आ जाता है. तो वी कैन राइट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट. मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो हम इसको ऐसे ही करेंगे. अगर हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की तरह लिख देते हैं मास को, तो वी गेट अ वैल्यू ऑफ मास. तो हमने यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें वापस देखते हैं, हमें मिल जाएगा जी रो ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब अगेन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. अगर सेम मास है तो वॉल्यूम भी सेम होगी. और उसके बाद 4 आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है 2 r. तो एक 2 आवर्स कैंसिल हो जाएंगे,
6r से, तो r⁴ हमारे पास बचता है, तो प्रोपोर्शनलिटी क्या बच जाएगी, r⁴ नेक्स्ट, 3 particles each of mass m are located at a vertical distance of an equilateral triangle of side A. At what speed will they move if they all revolve around the influence of a gravitational force of attraction in a circular orbit, circumscribing the triangle while still preserving the equilateral triangle? इसका कहने का मतलब ये है कि 3 पार्टिकल है, वो सर्कल के अराउंड मूव कर रहे हैं और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मूव कर रहे हैं। मतलब जो तीनों के बीच में डिस्टेंसेस होंगी वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह होंगी, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, राइट। अब इसको सॉल्व करना है तो एक बार फोर्स ऑफ इक्वेशन देख लेते हैं। ये पार्टिकल है, तो इसके ऊपर यहाँ फोर्स लग रहा होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट AM पार्टिकल, राइट। और इसके ऊपर यहाँ फोर्स लग रहा होगा, और तीनों का मास सेम है तो तीनों का फोर्स भी सेम होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये टोटल एंगल 60 होगा। और अपन को पता है दोनों फोर्स इक्वल है, तो जो इसका सेंटर ऑफ फोर्स जो होगा यहाँ पे वो इक्वली कट करेगा। सो दिस वुड बी 30, दिस वुड बी 30। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा और ये 60 होगा, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये F है और ये F है, तो नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, 2 टाइम्स ऑफ F cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2, तो √3 F अपने पास नेट फोर्स लग रहा होगा, राइट। एंड नाउ कैलकुलेटिंग द F, हमें वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, राइट। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है √3F, तो वो यहाँ पे क्या किस तरीके से मूव कर रहा होगा, क्योंकि सर्कल के लॉन्ग ही मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, mv²/r। तो F की वैल्यू निकाल लेते हैं। F क्या होगा अपना, gm²/r। तो अपने यहाँ पे R नहीं दे रखा, अपने A दे रखा है, राइट। तो अपन a² लिख देते हैं यहाँ पे अभी के लिए, टू मेक आर थिंग्स इजियर फॉर अस, राइट। तो अपने पास हो गया अभी यहाँ पे √3F इज इक्वल्स टू mv²/r। एक एम से एम कट जाएगा और अपने पास वेलोसिटी निकालनी है, तो जाता है √3gmr/a² का रूट, इज आवर वेलोसिटी, राइट। अब यहाँ पे अपन r को क्या लिख देते हैं, a/√3। तो अपना r, क्योंकि अपन को पता है फॉर्मूले से, आई एम नॉट डिराइविंग दिस फॉर a/√3 is our r, and then again putting a² here. So √3 gets cancelled, a and a gets cancelled, so we are left with gm/a is equals to our v, gm/a। एक बार देख लेते हैं यही आ रहा है क्या, यस, gm/a is our v। आई होप समझ आया होगा सब कुछ, वेरी इजी सॉल्यूशन, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आपको परपेंडिकुलर फोर्स निकालना था अलोंग द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट, एंड देन उसको इक्वेट करना था mv²/r के। जो आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर पहले पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है एक सर्कुलर, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। यानी कि कोई पार्टिकल अगर सर्कल में मूव करता है तो उसके ऊपर एक, जैसे कि अगर यहाँ पे पार्टिकल है, ये पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है ऐसे यहाँ पे विद वेलोसिटी v, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वो होता है mv²/r। दैट्स इट। उसके बाद आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर। फॉर देखते हैं, एवरी पार्टिकल क्रिएट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा तो एक चार्ज जो होता है वो भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल है तो उसकी भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, मतलब एक कुछ डिस्टेंस पे, हर एक डिस्टेंस पे वो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करता है, राइट। सो वी कैन कंसिडर इट एज अ फील्ड, कि वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है। ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, बट इट हेल्प्स यू सॉल्व क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो अपन पढ़ते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन, एवरी पार्टिकल क्रिएट्स अ फील्ड व्हेन द पार्टिकल कम्स into this particles field, there would be an interaction between the particles. Intensity of the field, that is how intensely it would attract the particle, is called the gravitational field intensity or the gravitational field strength. It is defined as the force experienced by the unit mass placed at a distance r due to m, that is E is equals to F by m. Always remember, it is a vector quantity, should be r at
vectorially while calculating gravitational field and intensity at a point due to one or more masses. ये तो बहुत obvious है. अगर कोई अपनी field होती है तो field is more than commonly is a vector field. Like electric field जो होती है वो भी एक vector होती है, right? तो हमेशा field को एज अ vector treat करना चाहिए, और addition and subtraction also should be done considering them as a field. अगर हमें निकालना है a field due to point mass m, तो अगर एक मास m की निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे फील्ड? नॉर्मल फोर्स निकालेंगे डिवाइडेड बाय द मास m. पहले हम कंसिडर कर लेंगे कि वहां पे अपन ने एक स्मॉल m मास का मास रखा है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है. देन यू कैन डू फोर्स बाय उस पार्टिकल का मास, तो यू गेट द वैल्यू आउट, राइट? नाउ गेटिंग द नेक्स्ट पार्ट. Due to uniform ring of mass m, radius a on its axis, consider any particle of mass m dm on the ring, say at a point A. Distance, the distance of this particle from P is okay. The gravitational field, okay. तो हमें एक रिंग के थ्रू निकालनी है, तो उसका डेरिवेशन है. देखो, सी आई टेल यू व्हाट. अगर आपने फिजिक्स में देखा होगा तो वी ऑफन डिराइव ग्रेविटेशनल फील्ड और मोमेंटम और बी द लीनियर फील्ड by taking integrating of different objects by integrating smaller pieces that can give us the gravitational field, right? तो इसमें क्या करते हैं, रिंग में क्या कर सकते हैं अपन? जैसे कि अपने पास एक रिंग है यहाँ पे, तो let me make a ring first. See, making a ring can be a tough part. This is a circle. Okay, let us see if this works. Just a minute. Hmm. अच्छा, it does not work. This is a circle. This is a circle, right? I'm done. So अगर हम एक छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं यहाँ पर डीएम मास का, तो उसकी डिस्टेंस फ्रॉम हियर कैसे निकाल सकते हैं अपन? अपन को पता है ये आर होता है, ये ए होता है. दे हैव टेकन रॉन्ग ए एंड आर, गाइस. यूजुअली आर इज द रेडियस एंड ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग. यहाँ पर डी ले लेते हैं अपन अपने सलू वॉट एवर वी कह लेते अपने कन्वीनियंस के लिए. तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस लगाने पर, राइट? तो अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो अपने पास फोर्स कितना हो जाएगा, एंड व्हाट वुड बी इट्स डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये पॉइंट है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी. तो वी नो, अगर हम इसको करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. देखो, एक पार्टिकल है तो उसके ऊपर ये वाला फोर्स लग रहा होगा, ये थीटा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा. तो हमारे पास फोर्स कितना हो जाता है, जी डी एम बाय डी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा. एंड थीटा को कैसे वेरी करेंगे अपन? थीटा वेरी होगा इसमें? थीटा वेरी नहीं होगा बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट है. इसमें सिंपली एड अप करना है अपन को डीएम को. बट इन द केस ऑफ साइन, अपने पास वहां पे साइन के अंदर क्या होगा, सब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो साइन के अंदर वी गेट कि वो जीरो हो जाएगा. करके देख लेते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है तो. अगर अपन यहाँ पे साइन ले लेते हैं, तो क्या आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको ऐसे. एक रिंग है यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स लग रहा है और एक यहाँ फोर्स लग रहा है, तो वी नो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं बचेगा, राइट? क्योंकि हर बार वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सो इट वुड नलिफाई, क्योंकि सब इक्वल माइंड यूज करेंगे. अब देखते हैं फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क. तो यूनिफॉर्म डिस्क को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? यू कैन डू इट बाय कंसिडरिंग इट द ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम, लाइक, जो इंटीग्रेशन वाला हमारा ऑब्जेक्ट होगा वहां पे रिंग हो सकता है, ठीक है? आप यहाँ पे एक रिंग ले सकते हो डीएक्स विद पी एंड देन इंटीग्रेटेड. दैट वुड आल्सो गिव यू अ सिमिलर रिजल्ट. देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. हाईलाइट द रिजल्ट फॉर यू गाइस. और यहाँ पे सबसे एंड में भी दे रखा होगा. देन एक स्फेरिकल शेल के अंदर क्या होता है ये हमें पता है. इनसाइड द शेल के अंदर we have zero gravitational field.
Okay, so do we have table here? We don't have a table here. So what I would suggest you कि आप try कर सकते हो उनको direction का by yourself, because that gives you a lot of factors कि आप exam में भी इसको आराम से कर पाओ. ये तो हो गया अपना first. Then this is you doing. Now we have here. This is due to artist. This is shed. This is due to uh sphere. Right? You are done with this. अगर example करना है तो we'll get back to examples later on. एक बार theory. Let us complete the theory once and then we'll get back to the example. Right? So let's see. Earth's gravitational field. We have seen what gravitational field is, how an object would interact with the other object. Earth is no different as it creates a gravitational field, interacts with us. G is equals to F by M. G should be written as G bar or F as F bar. Take care of that. What do you mean by G bar and F bar? That is simply to denote a vector sign. Now the variation in the value of acceleration due to gravity. ये काफी important है क्योंकि there are some concepts that you have to learn here. कि gravity जो होती है वो uniform नहीं है across the globe. क्योंकि आपको पता है our globe is not completely spherical. It is a sort of this shape, right? It is more flatter from the north pole and south pole, right? तो अगर हमें करना है उसको तो दिस कर सकते हैं. देखिए हमें डिफरेंस भी दे रखा है. अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल. इट इज समवट फ्लैट एट टू पोल्स. द इक्वेटोरियल रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर मोर देन द पोलर रेडियस. मतलब यहाँ की जो आर है एंड कैपिटल आर है, वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का कितना आता है? 21 किलोमीटर आता है डिफरेंस. So that is how big the difference is. नाउ अगर हमें हाइट देखनी है तो ये तो एक तो हो गया चीज की अर्थ के अंदर वेरिएशन कैसे आता है. उसके अलावा क्या होता है व्हेन यू मूव away or towards the earth, right? If you go inside the earth or move away from the earth, you will observe a change in gravity, right? Because since the distance is increasing, the gravitational field would also decrease. So let us see what does it look like. अगर आप सर्विस के ऊपर जाते हो तो क्या कैसा डिफरेंस आता है, राइट? जी डैश क्या जाता है आपका? जी बाय 1 plus h, sorry, 1 plus h by r whole square. This is also an important formula. I'll highlight for you guys. And another is डेप्थ बिलो सर्विस की. अगर आपने डक करा है खोल तो वो कैसा लगेगा? तो आपका जी डैश हो जाता है इसमें दिस. वेरी सिंपल. नाउ एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ. Let us consider a particle P at rest of latitude. Okay, a pseudo force acting is this. Okay, so it is a basic concept, nothing out of the box. हमें रोटेशन के ऊपर निकालना है कि सूडो फोर्स कितना लगता है, ठीक है, पार्टिकल के ऊपर. तो वो दिया गया इसके अंदर, वो देख सकते हो हाउ दे हैव कैलकुलेटेड इट. आई विल नॉट गेट इन द डिटेल्स ऑफ इट बिकॉज इट इज नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस, excuse me. So this topic is really nice. Simple pendulum has a exact time period of 2 seconds when used in the laboratory at North Pole, when the time period are the same used in the equator. तो क्या होता है? देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T is equals to 2 by L by G. राइट? सो L तो हमारा सेम रहेगा बट G इज चेंजिंग, राइट? सो G डैश क्या हो जाता है? G माइनस R ओमेगा स्क्वायर.
Okay, so just let me read it through once, and then I'll get back to you. So what are they trying to do is they're trying to see the change in variation in G. G कितना चेंज होता है अगर आप नॉर्थ पोल टू इक्वेटर पे आते हो, राइट? तो इसमें हम देखते हैं। तो व्हाट दे हैव डन इज यहाँ पे जी डैश की वैल्यू दे रखी है, बट अनदर वे ऑफ गोइंग कैलकुलेटिंग द जी डैश वैल्यू इज फ्रॉम हियर एज वेल, राइट? आर की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट? तो अपन उसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला। सो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन कि जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। क्योंकि रोटेट भी करता है ना अर्थ, अपना अर्थ इज रोटेटिंग आल्सो कॉन्स्टेंटली, सो जी आल्सो चेंज ड्यू टू द रोटेशन। और वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय 24 इंटू 3600। नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या है। इज इट द सेम? यस, दिस इज द सेम। नाउ वी पुट द वैल्यू एज इट इज, हमें मिल जाती है। हमारे पास नया जी मिल गया हमें, तो हमने नई जी की वैल्यू पुट कर दी एंड वी गेट द रेशियो। नेक्स्ट, अब देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज when you do energy balances, right, so we have to, more than on often cases, we have to consider gravitational potential energy। मतलब जो पोटेंशियल हमें कैरी या फिर लूज करते हैं हम while moving up and down, right, तो वो हमें कंसिडर करना पड़ता है एनर्जी बैलेंस के अंदर, बिकॉज इट इज अ कंजर्वेटिव इन नेचर। ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, राइट? तो उसका कंसिडरेशन करना जरूरी है। नाउ लेट अस सी हाउ डज इट वर्क। एक बार देखते हैं। तो हमारे पास आ जाता है कि ग्रेविटेशनल जो होता है पोटेंशियल, वो क्या होता है, ये होता है। You can see the derivation also. I can give you a minute to read it through. I'll give you a minute. एक बार read through कर लीजिए, because see here the derivation is not so important, because आपको derivation पढ़ना है, तो I'll give you a minute to read it through. Okay, so you must have read through, right? So let's move on. एक बार देखते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर हम कैलकुलेट करें एक पोटेंशियल, आई हाईलाइट द फॉर्मूलाज फॉर यू गाइस कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो देखते हैं, एक पॉइंट मास के कारण जो पोटेंशियल होता है वो ये होता है। एक जो रिंग के कारण होता है वो ये होता है। वेरी इजी टू डिराइव, राइट? इट इज नॉट लाइक अ बुक कंसेप्ट। यस, ये टेबल का like I put up stars over it. This table is very important. I'll give you a minute to screenshot it अगर आप screenshot लेना चाहते हो तो। इसका screenshot लेके लिख के रख लो।
वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज दीज फॉर्मूला समटाइम्स आर जस्ट डायरेक्टली एप्लीकेबल। आई एम नॉट सेइंग कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि एडवांस में होता है कई बार कि यू दे डू नॉट गिव यू स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, राइट? स्टैंडर्ड एप्लीकेशन पे नहीं देते हैं बिल्कुल भी क्वेश्चन। You have to derive your formulas then and there. But in mains, these have like very important. They can help you a lot. So let's move on. Screenshot ले लिया होगा लोगों ने जिन्हें लेना होगा. Now let's see what do we have another is binding energy. ठीक है. तो एक देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, कि जो एनर्जी होती है वो कितनी एनर्जी पर एक सिस्टम स्टेबल होता है। अब स्टेबल का मतलब ये है कि जिस कंडीशन में वो अभी है उसी कंडीशन में रहे फॉरएवर। मतलब वो एक पर्टिकुलर एक सिंक हो जाए पार्टिकल्स के बीच में, such that they move continuously in that particular position और remain in continuously in that position, उनको चेंज ना करने की जरूरत पड़े। तो उसके लिए क्या होता है, we have a kinetic energy, potential energy defined, and उनके बीच का एक रिलेशन होता है that has to be maintained। तो एक बार रीड थ्रू करके देखते हैं what do we actually mean। तो it is the energy due to which a system is bound. Suppose the mass m is placed on the surface of Earth. The radius of the Earth is r and its mass m. Then the kinetic energy of the particle is zero and the potential energy is this. Therefore, the total mechanical energy is this. It is due to this energy the particle is attached to the Earth. If the amount of energy required is supplied to the particle in any form, the particle is no longer remain bound to the Earth. It goes out of the gravitational field of the Earth। मतलब कि अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और हमने उसको थोड़ी सी और अगर एनर्जी सप्लाई कर दी तो मूव करने लग जाएगा, बिकॉज उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी। देन इट वुड मूव एंड मूव अवे फ्रॉम द एनर्जी, इट वुड मूव अवे फ्रॉम द एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ। मतलब जो थी एनर्जी उसके साथ तो बढ़ जाएगी उसकी एनर्जी, बट इट हैज टू बी मेंटेन्ड देयर, राइट? सो इट वुड मूव अवे। अब एक क्वेश्चन अपन चाहे तो कर सकते हैं, ये वाला इसमें दे रखा है, assuming the earth to be sphere of uniform mass density, calculate the energy needed to completely disassemble it against the gravitational pull amongst its constituent particles, given the product of the mass and radius is this। okay, so work completely done to disassemble the earth will be equal to the change in potential energy of the earth। Initial potential energy is negative and the final is zero। If m and r are the mass of the radius of earth, then the density is this। Of course we know that this is the density, it is mass by volume। Earth may be supposed to be made up of large number of thin concentric shells। Of course it can be disassembled by removing such shells one by one। When such a sphere of radius x is left, energy needed to remove a shell of thickness lying between this and this is ओके। तो देखो अगर हम ये क्या कहना चाहते हैं, अपने पास एक अपना अर्थ है, तो वी डिवाइडेड इट इन शेल्स, राइट? इसे शेल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर एक्स रेडियस है और यहाँ पे डीएक्स लेंथ का हमें शेल निकालना है, तो उसके लिए एनर्जी कितनी लगेगी, जी m1 m2 बाय एक्स। हमें रेडियस पता है, मास पता है, तो हमारा वर्क कितना होता है, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल। तो वो कैसे होगा, g m1 बाय दिस। हाउ डिड वी कम अप विद दिस, हमें x पता है, हमें m1 पता है, m1 पता है, हमें m2 पता है, m2 भी पता है। देखो m1 क्या है, इज द मास इनसाइड द स्फीयर, और m2 क्या है, जो अपनी शेल है उसका मास। तो शेल का मास कैसे निकालोगे, अगर अपने पास एक dx थिकनेस का शेल है, तो वो कैसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ द शेल इनटू मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस। एरिया ऑफ क्या होगा, एरिया ऑफ एक शेल क्या होता है, 4 पाई x² इंटू वी। तो अपने पास आ गया, अपने पास वर्क आ गया। तो अपन ने वर्क को अगर अपन इंटीग्रेट करेंगे, राइट, फ्रॉम 0 to r, तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस। एंड नाउ वी कैलकुलेटेड, सिंपल। Now getting to a new concept, that is escape velocity। This is very easy guys, I hope you understood it। इसमें हम कैसे, क्या है, हमने हमारे पास अर्थ थी, हमें बोला डिसेंबल करना है, तो अपन अर्थ को कैसे डिसेंबल कर सकते हैं, हम एक एक शेल जो होती है dx लेंथ की शेल रिमूव करते हैं,
and then see the change in potential energy. Energy is zero, right? So now let's move on. Okay, so let's see the next topic that we have here is next हमारा topic है escape velocity. So escape velocity क्या होता है? Minimum velocity required for a particle to go infinitely away from the Earth or from for any planet for that matter. उसको escape velocity बोलते हैं. तो इसको आप कैसे कर सकते हो? escape velocity को आप इतनी kinetic energy प्रोवाइड कर दो कि जब वो इनफाइनाइटली दूर हो जाए तब उसकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी. मतलब जो उसकी एनर्जी वहां पे हो तो वो जीरो हो जाए. यानी कि kinetic energy right now at Earth plus potential energy at Earth should be इक्वल रहेगी. और बाद में क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी का अपन जीरो भी कर दे इनफाइनाइट पे, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी. So we know potential energy at infinity is zero, and to make the escape velocity minimum, we write kinetic energy at infinite as also zero. तो kinetic energy क्या हो जाएगी? हाफ. अरे सॉरी फॉर द ग्लिच. सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv square is equals to g m. Capital M is the mass of Earth by radius of this, right? So m and m gets cancelled and velocity comes at 2 gm by r squares root. But see, again there is a mistake. It won't be r square here because हमें potential लिखना था ना कि force. तो यहाँ पे potential में r आता है, right? We had studied earlier that. My bad. So this is the formula that we get. And now we come up with satellites. So satellites are equally important. आपको पता ही होगा दो टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं कुछ प्लैनेट के. एक नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट. India has been also sending a number of artificial satellites from Earth, and we have a single natural satellite that is the Earth, right? तो अब satellites की study करेंगे from here on. We'll study satellites here on from this topic. So देखते हैं. तो फर्स्ट अपना टॉपिक आता है ऑर्बिटल स्पीड की. ऑर्बिटल मतलब इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट की स्पीड कितनी होगी. तो अपन कैसे निकाल सकते हैं वो? सो लेट अस सी हाउ डू वी कैलकुलेट इट. तो देखिए अपना एक पार्ट यहाँ पे I'll take the help of this diagram itself. There is a mass part satellite of mass m जो v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा. फोर्स कितना लग रहा होगा? हाफ g m m. अब यहाँ पे we have taken same mass so it does not matter. m small r whole square. I have taken half won't be there. It would be g m m1 half. This is the force I'm getting, and that would be equal to mv square by r because यही एक centripetal force है. So यहाँ से m और m कट जाएगा and what are we left with? Root of gm by r. ये हमने कहाँ से निकाला? ये एनर्जी बैलेंस से नहीं निकाला. ये अपन ने निकाला है सेंट्रीफ्यूगल या फिर आप सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना रोटेशन वाला, उससे निकाला. सो वी नो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे इतनी है. ठीक है. बट हमें निकालनी है एस्केप वेलोसिटी, या फिर वो कितना एस्केप कर जाएगा, कैसे एस्केप करेगा. तो एस्केप कितना होता है? रूट टू टाइम्स होता है ऑफ आर ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो वी एस्केप इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी. सो वी गेट दैट रिलेशन. और हमें पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी एक ऑर्बिट में. हम टाइम निकाल सकते हैं. टाइम कितना होगा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. As simple as that. And not talking of the energy, we know energy is this. This is the potential energy, not the total energy. Kinetic energy we are aware of, so the total energy becomes as this.
Total energy is also negative here. Why is it negative? Because the orbit is stable here, and when a object is stable in a system, more than often their total energy is less than zero. Okay, so now moving on, let's see क्या हम आगे कौन सा टॉपिक पढ़ सकते हैं. Let's skip the question for the time being क्योंकि अगर टॉपिक हमें कुछ पढ़ना हो तो वो कर लेते हैं, and then we'll move on. So okay, now planets and their motion. This is also very important. Let me see that is it a part of discussion or not for today's lecture. I'll just get back in a minute. Yes. So the this to be as studied here. So इसमें देखते हैं planets कैसा होता है. तो you might be aware that our Earth revolves around the sun, right? So similarly, there are different planets that revolve around the sun, and we have our solar system. What do we call the system as? This is our solar system. And how do we define that? अगर आपने maths में पढ़ा होगा कि ellipse, right? We had studied ellipse in our maths lectures. So similarly, a planet also revolves around the sun, where sun is located at one of its foci, and the path is elliptical, right? The orbit of the planets moving around the sun is that of an ellipse, right? So now what do we say here is the laws of area. So there are two type of laws that Kepler's gave, and one is the law of the area, and one second is the law of the periods. So what does the first law look like? That the let us read through. The radius vector from the sun at the focus of the elliptical orbit to the planet sweeps all equals area in equal intervals of time. मतलब जो हमारा एरिया कवर होगा by the planet with the sun, right, with the sun in a particular interval, वो हमेशा सेम होगा किसी भी दूसरे इंटरवल के लिए. मतलब अगर एक सेम टाइप का इंटरवल है और किसी पार्टनर की देखते हैं ये वाला इंटरवल, ये अगर सन ने कवर किया है T1 टाइम में, मतलब अर्थ ने, और ये कर रहा है T2 टाइम में, और T1 और T2 इक्वल है, तो ये दोनों एरिया भी इक्वल होंगे, राइट. सिमिलरली फॉर दिस, अगर सेम टाइम में एरिया कवर करा गया है, देन द एरिया वुड बी इक्वल. तो एरिया कैसे लिख सकते हैं अपन? हाफ, लेट मी इरेज इट अ बिट एंड देन गेट बैक. सो अपन एरिया कैसे लिख सकते हैं? हाफ radius into this length, and this length is given by r d theta, and for here as well. तो वो इक्वल होते हैं, राइट. हमें एरियल वेलोसिटी पता है क्या होती है? हाफ ओमेगा आर स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट होती है. नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर theorem that we have, that the square of the time period of revolution of a planet is proportional to the cube of its mean distance from the planet from the sun. मतलब see, since the sun is not located at the center, एक इलेक्ट्रिकल पाथ है, तो जो डिस्टेंस होती है प्लैनेट की वो सन से वेरी करती है. तो हम क्या निकालते हैं? मीन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट. अगर वो मीन डिस्टेंस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस. नाउ व्हाट डू वी डू? इसके अंदर सिंपल एप्लीकेशन आते हैं डायरेक्ट रेशियो लेने के, कि टाइम पीरियड चेंज हो गया और मीन डिस्टेंस चेंज होगी तो कैसे कर सकते हो. इट्स वेरी इजी टू नो. नाउ we are done with this. So let us do some questions and we'll wrap up the lecture then. Let us do some questions. Which question do you want me to do? Let us take this question. 14th, question number 14th. It is a JEE advanced question. And what does it say?
a planet in a coplanar circular orbit in the same sense. Their periods of revolution are 1 hour and 8 hours respectively. The radius of the orbit of S1 is 10 to the power 4k. When S2 is closest to the S1, find the speed of S1 and S2. S2 related to S1. The angular speed of S2 as observed by the astronaut in S1. तो देखो अपन फर्स्ट चीज जो कैपलस लॉ की लगाएंगे यहाँ पे टाइम पीरियड अपन को दे रखा है और रेडियस का हमें रेशो निकालना है मोस्ट प्रोबेबली। तो हमें पता है दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 का R1 का क्यूब बाय R2 का क्यूब। तो हमारा T1 क्या है 1/8 का क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का क्यूब R2 का क्यूब। मतलब R1/R2 is equals to 1/4, right? So 4 times of R1 is equals to R2, right? This we know. अब क्या देखना है हमें हमें रेडियस ऑफ S1 पता है, तो मतलब हमें पता है R1 क्या है, R1 कितना है 10 to the power 4। तो ये हो गया अपना R2 की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव निकालना है, राइट? द स्पीड ऑफ S2 विथ रिलेटिव टू S1 और क्लोजेस्ट होंगे मतलब दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे इस पॉइंट पे यहाँ पे। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होती है, हमारा स्पीड पता है, स्पीड इज गिवन बाय 2πr/t। तो r/t की प्रोपोर्शनल होती है, हमें t पता है r पता है, तो वी कैन सिंपली कैलकुलेटेड t कितना है हमारा, फर्स्ट t हमारा कितना रेशो जाएगा R1/T1। हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, रिलेटिव निकालना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 कर रहे हैं, राइट? अपन तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग, राइट? तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं v निकाल के। सिंपल जैसा सोल्यूशन में क्या है, इट्स नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, वेरी इजी सोल्यूशन वी हैव हियर। वी गेट इट, v हमने दोनों v निकाल लिया और उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल। और हमें सीन निकालना है तो हमें डिस्टेंस भी देखनी पड़ेगी। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, लेट अस सी। एक स्पेसशिप है जिसको हमने लॉन्च किया है सर्कुलर ऑर्बिट में, क्लोज टू अर्थ सरफेस। What additional velocity is now to be added to the spaceship in the orbit to overcome the gravitational pull? ठीक है, तो हमें पता है कि क्लोजेस्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होती है, √g। अब और हमें काइनेटिक एनर्जी पता है और टोटल एनर्जी भी पता है कितनी होती है, और हमें उसको मूव करना है दूसरे ऑर्बिट में, तो एडिशनल एनर्जी को सप्लाई करनी पड़ेगी। सो हाउ डू वी सॉल्व इट, दैट कि काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिट की पता है हमें और पोटेंशियल एनर्जी पता है ऑर्बिट की, उसमें हमने कुछ एक्स ऐड किया तो हमें नई काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पे वील राइट r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, एंड हियर वी कैन टेक r इज इक्वल्स टू x। सॉरी, एस्केप करना है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइनाइट में जाके जीरो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो जाएगी, सिंपल। एस्केप वेलोसिटी निकालनी है बेसिकली, बट यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालनी है, ऐसे। I'll give you a minute to read through the solution, guys. It's very easy to understand, but I'll not be able to explain you this. I'm not getting the way to explain you, but I'll give you a minute to read it through. Just read कर लीजिए एक बार इसको, तो आपको अपने आप समझ जाएगा। Okay, you got it. So now let's move on to another types of question. We also left some question in the beginning, right? So we'll try to take that. ये वाला कर सकते हैं। A particle of mass m. Do we have any topics left? Though let me just check once again. No, these were the only topics that were involved in this chapter.
This chapter is comparatively easy for you guys. मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर आसान होता है usually, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, right? It is basically more on the formula side and how do we like apply दो formula is important. तो एक बार अपन recap कर लेते हैं अगर ऐसा है तो. Firstly we studied that gravitational force होता क्या है, right? हमने डायरेक्शन पढ़ा, उनका डायरेक्शन कैसा होता है. Then we have studied what the gravitational field is. Then another point is intensity कैसे vary करती है gravitational field की. Then we saw that ring के अगर कोई ring है तो उसका gravitational pull कैसा होता है along the axis. Then we saw it for the disk. Then we saw it for the shell. Then we saw it for the sphere. See, I would have derived these for you guys, but it is not that important. I would suggest you कि आप एक बार खुद से try करिए. Right? If you try it by yourself, तो आपको काफी आसान हो जाएगा इसको solve करना. Right? Okay, then again we have another formula here. This is also very nice question. I would suggest you to do this by your own. This is very nice question. This. So try doing this by your own. So you'll get an idea of how do we solve questions. Right? So we can do another question. Suppose the Earth increases its speeds of rotation. At what new time period will the weight of the body on the equator become zero? Take g is equals to 10, the radius is this. So let us see what does the solution says. When the rotational speed of Earth is increased, the centrifugal force acting on the particle at rest equator also increases. At the equator, the centrifugal force is opposite to the force of gravity. When the apparent g value g is g minus r omega square, for the mass of the body to be equal to zero, then g dash had to be zero, then omega has to be this. So we know time period is 2 pi by omega. So 2 pi by g by r. This is the new time period that we have. Yes, simple. We can calculate the new time period. This was very easy, right? You just had to apply some formula and get the value out. Let's move on. We already did the pendulum one, right? Now, now let us see what is the potential energy. We studied about the potential energy of the gravitation by the gravitational force. Then we the for you अच्छे से तरीके से याद करके काफी what do we have for the these you can question number 9 and then end the session because I'm already done with my questions. So let us do with question number 9. एक पार्टिकल है उसको हमें अपवर्ड फायर किया विद स्पीड ऑफ 9.8 किलोमीटर पर सेकंड. Find the maximum height attained by the particle. The radius of earth is this. Okay. सो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है जो ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशन के पुल के अपोजिट जा रहा है. काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा. एट द हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल मोशन जीरो हो जाएगा और जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स में भी आपने डेफिनेटली किया होगा ये. तो हमें पहले क्या निकालना है, हमें निकालना है अगर अर्थ ऐसी है, ऐसे मूव कर रहा है वो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस डी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर. राइट, काइनेटिक एनर्जी अपन को दे रखी है और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच. राइट, तो अपन कैसे करेंगे, माइनस जी एम एम बाय आर प्लस हाफ एम वी नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी एम एम आर प्लस एच. Right, now we solve. We know what is gm. Gm is equals to gr square and you put that value and solve. It's a basic algebraic question that you have to solve. Now moving on, do we have another question?
We already did this one, right? Escape velocity, we studied what the escape velocity is. Escape velocity मतलब क्या होता है? आप इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो कि वो जब इंफिनिटी पे जाए तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी जीरो हो जाए. Okay, now moving on, let us see, do we have another part? We studied satellites as well. Satellites की velocity हम पहले कैसे निकालते हैं? With the help of centrifugal and centripetal force. कि वो कैसे move करता है particle, we get the values out for the velocity and then for the energy part. So I think I'm done for the session. If you have any doubts, kindly put them in the comment box. I'll try to solve it for you guys there. I know I'm cutting the session short here, but since the topics were less, so I hope it suffices. Let's see. Yeah, okay. Thank you.